Hi friends, in today's session we'll start with the modern periodic table according to this block. Fine. तो अकॉर्डिंग टू ब्लॉक, चार ब्लॉक में ये पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स based on the subshell in which the last electron enters. They are S block, P block, D block and F block. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ये पूरा कंसेप्ट जो है वो आपको चैप्टर नंबर 2 के एंड में पढ़ाया जाएगा. दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन. यहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं करना है, तो जहाँ जहाँ कुछ भी हिंट्स की ज़रूरत होगी मैं आपको देता रहूँगा. सो फर्स्ट जो ब्लॉक है दैट इज कॉल्ड इज एस ब्लॉक एलिमेंट. S block element, so there are elements in which the last electron enter into this outermost shell, that is called as S. S subshell के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस होता है. That's why such kind of blocks are entitled as a S block element. They included elements of group number 1 and group number 2. The general outermost electronic configuration is NS1 and NS2. जो ग्रुप नंबर 1 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है NS1 एंड ग्रुप नंबर 2 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है NS2. दे आर ऑल रिएक्टिव मेटल्स विथ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी. दे लूज देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन रेडिली टू फॉर्म +1 एंड +2 आयंस. मीन्स ग्रुप नंबर 1 जो है वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है एंड कन्वर्ट हो सकता है +1 आयन के अंदर, एंड ग्रुप नंबर 2 जो है वो आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है एंड कन्वर्ट हो सकता है +2 आयन में. देन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्टिव इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप. दे मेनली फॉर्म्स दिस आयनिक कंपाउंड एक्सेप्ट टॉप मोस्ट फैमिली मेंबर दैट इज लिथियम एंड बेरिलियम. अब ये ग्रुप 1 एंड 2 कौन से है, कौन कौन से एलिमेंट फैमिली के अंदर प्रेजेंट है, वो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. So this is the group 1 elements and this is group 2 elements. Group 1 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, that is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Francium is slightly radioactive in nature, so that's why जब भी हम chemical and physical property की बात करेंगे तो francium को include नहीं करेंगे. So lithium से लेके cesium are entitled as a group 1 element. Group 2 element के अंदर कौन कौन से, तो that is beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. Once again, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Radium once again a radioactive species है, इसीलिए हम यहाँ पे इसकी बात नहीं करेंगे. जब भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो दिस इज बेरिलियम टू बेरियम. अब बेरिलियम एंड लिथियम ये दोनों के दोनों स्मॉलर इन साइज है. व्हाई? बिकॉज देयर एटॉमिक नंबर इज रियली वेरी स्मॉल, and due to this their physical and chemical properties are somewhat different to this remaining family member. That is called anomalous properties of element. Means lithium and beryllium ionic नहीं है, they covalent है. Remaining family member are ionic in nature. This family member having one electron in outermost shell और one electron निकालने के बाद they have a +1 charge. Means आपने जनरली सुना होगा Na++ Cl-. तो Na+ का मतलब sodium releases one electron and converted into Na+. Likewise KCl, K++ Cl-. So this all the family member can release one electron in outermost shell and convert into +1 charge. The second family member can release 2 electrons, that is Mg+2, Ca+2, Ba+2 and convert into +2 charge. Group number 1 is commonly known as alkali metal. याद रखिएगा इसका कॉमन नेम है alkali metal. क्यों? क्योंकि ये अल्कलाइन अर्थ में क्रस्ट में बहुत ज्यादा अल्कली सॉल्ट्स बनाते हैं, जैसे NaCl, KCl, KBr, NaBr, LiCl, CsCl2. दे ऑल आर अल्कली इन नेचर. एंड सेकेंड फैमिली मेंबर को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. Alkaline earth metal. This is alkali metals and this is alkaline earth metal. So this is all about your S block element. Next we move on to this P block elements. So which are the properties available in P block elements? So P block element के अंदर total 6 group available है. Group number 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Group number 13 को एंटाइटल किया जाता है बोरॉन. 14 को एंटाइटल किया जाता है कार्बन फैमिली. 15 को नाइट्रोजन फैमिली. 16 को ऑक्सीजन फैमिली. 17 को फ्लोरीन फैमिली एंड 10th के 2 या 3 नाम है, दैट इज ऑल्सो एंटाइटल एज अ नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस
इनर्ट का मतलब दे ऑल हैविंग अ फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब क्या होगा, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो ऑल इलेक्ट्रॉन आर इन पैड एंड ड्यू टू दिस दे आर इनर्ट. इसके कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर इनर्ट. That's why they are entitled as noble gases. That is neon, argon, krypton, xenon, radon. They all are noble gases. Group number 17 is commonly known as halogens. आप सभी को पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन and astatine. We are not introduced astatine in this group just because slightly radioactive in nature. So halogen family क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन and iodine are known as halogen family. नेक्स्ट कौन सा है ग्रुप नंबर 16? दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड एज द कैल्कोजेंस. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम. वंस अगेन स्लाइटली रेडियोएक्टिव इन नेचर, वी आर नॉट डिस्कसिंग पोलोनियम. ऑक्सीजन, टू सर्वाइव ऑक्सीजन हमें चाहिए. सेकेंड सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलूरियम. नेक्स्ट फैमिली मेंबर इज नाइट्रोजन फैमिली. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. They all are entitled as group number 15. Group number 14 की बात करते हैं. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, they all are entitled as group 14. And last is group 13, boron, aluminium, gallium, indium, thallium. They all are entitled as group 13. अब ये सारे के सारे जो p ब्लॉक एलिमेंट है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा NS2 तो है ही, then NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6. So general electronic configuration बन जाएगा NS2 NP1-6. That is the general electronic configuration of P block elements. P block having 6 block, that is group number 13 to group number 18. So as we already discussed P block, there are elements in which the last electron enter into this P subshell. Electronic configuration के सेशन में भी आप लोगों को पढ़ाया गया था कि that is P having a 6 electron accommodation. So that's why this include group number 13 to 18. They are also known as representative elements. Their general outermost electronic configuration is NS2, NP 126. 126 means अगर group 13 है तो 1 and group 18 है तो 6. So the 18 group are known as noble gas. Why noble gas? Because they have fulfill electronic configuration. That's why they are entitled as a noble gas. They have called complete filled orbitals. Their non-metallic characteristics increase from left to right in a period, and the metallic characteristics increases from top to bottom in a group. So this is all about your P block element. Next we move on to this D block element. D block is also known as transition element. Why transition element? Because it is in between S and P. लेफ्ट साइड पे S है, राइट साइड पे P है, इन दोनों के बीच में ट्रांजिट करता हुआ 10 एलिमेंट का एक पूरा सा ग्रुप है, बंच है, that is called as D block element. These are the elements in which the last electron introduced into this penultimate D subshell. They include elements of this group number 3 to 12. They are also known as transition elements. Since they shows the transitions from this most electropositive S block to the least electropositive P block, means they in between S block more electropositive, means they can release this electron, while in case of P block are always gain electron. तो by losing electron to gaining electron, इन दोनों के बीच के जो elements होते हैं उसको बोलते हैं transition elements. The general electronic configuration is N-1 D1 to 10, NS 0 to 2. They are all metals from colored compounds or ions. They shows the varieties of oxidation state, valencies, paramagnetic, catalytical properties and many more. D block elements are really very important just because all the precious metal like Au, Ag and Pt are available in this. Likewise, hemoglobin having iron, so Fe is also available. We are also living in a concrete jungle, so that's why that is Fe is also used into this industrial purpose. Chromium, nickel, copper, all the day-to-day life useful elements are present into this D block. So that's why D block is really very important. Let's take a quick look of D block element. So this is all about your D block. देखिए D block की positions कहाँ पे है? D block की positions है S block and P block के बीच में.
ये दो ग्रुप 1 ग्रुप 2 दैट इज अल्कलीन अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड दिस आर द 6 ब्लॉक ऑफ p ब्लॉक्स. इन दोनों के बीच में दिस इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दिस ऑल आर मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, एंड इन दोनों के बीच में जो ब्लॉक जो है दैट इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स. सो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर 3 ग्रुप अवेलेबल है. सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज 3D, 4D एंड 5D. सो दिस 3D आर एंटाइटल्ड फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, दैट इज 21 से लेके 30 वाला पूरा जो रेंज है दैट इज कॉल्ड 3D एलिमेंट. आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसी के अंदर भर के पड़े हैं. क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. नेक्स्ट 4D एलिमेंट. 4D एलिमेंट स्टार्ट विथ ड्यूटेरियम टू कैडमियम. इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा सिल्वर आ रहा है. नेक्स्ट इज रोडियम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. मोलिब्लेडम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट 5D एलिमेंट दैट इज कॉल्ड इज हैफ्नियम, HF से लेके Hg. Hg यूज्ड इनटू दिस मर्क्यूरी, Au and Pt. So most precious metal tungsten is nowadays really very useful. Iridium is also used. जो वेट बार होते हैं वो इरिडियम प्लेटिनम के बने होते हैं. So iridium is one of the most important element. So this all are the D block element. This is entitled as a 3D group element. This is entitled as 4D and this is entitled as a 5D element. अब देखिए यहीं से एक अंदर छोटा सा ब्लॉक आ रहा है. यहाँ पे लिखा हुआ है 57 to 71. देखिए यहाँ पे 56, देन देयर इज 57 to 71 एंड देन 72. मीन्स ये पार्ट जो है वो पूरा का पूरा नीचे लिखा हुआ है. देखिए 57 से लेके पूरा 71. लाइकवाइज यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, दैट इज 88 है, उसके एग्जैक्ट बाजू में लिखा हुआ है 89 से 103 एंड देन वंस अगेन 104 यहाँ पे है. सो ये जो ब्लॉक है वो पूरा का पूरा नीचे है. So this is entitled as F block element. F block is subdivided into 2 part only. That is, this is entitled as a 4F and this is entitled as a 5F. 4F का नाम है that is called as lanthanide series and 5F का नाम है that is called as actinide series. Why it is entitled as a lanthanide series? Just because after lanthanum, first element का नाम क्या है? देखिए lanthanum. So that's why it is entitled as a lanthanide series. फर्स्ट एलिमेंट का नाम क्या है? एक्टिनियम. सो आफ्टर एक्टिनाइड, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्टिनाइड सीरीज. सो दिस फुल एलिमेंट्स आर एंटाइटल्ड एज लैंथेनॉइड्स एंड सेकंड इज एंटाइटल्ड एज एक्टिनॉइड्स और एक्टिनाइड सीरीज. इन दिस ग्रुप हैविंग टोटल 14 एलिमेंट्स. अब 14 एलिमेंट्स क्यों है? क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के सेशंस में पढ़ा था F सब डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट, each subdivision having 2 electron. So that's why 14 elements present into this. So this is called your F block element. This is 4F and this is 5F. अब ये एक्टिनाइड सीरीज जो है उसमें हाईएस्ट रेडियो एक्टिव स्पीशीज है. यू कैन फोकस यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, ये दिस ऑल आर रेडियो एक्टिव स्पीशीज. सो बेसिकली यहाँ पे एक और दो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे आफ्टर 100 दैट इज एंटाइटल्ड एज मैनमेड एलिमेंट, दैट इज आफ्टर फर्मियम. सारे के सारे जो है वो मैनमेड, मीन्स 100 के बाद सारे के सारे मैनमेड है. और 92 के बाद एलिमेंट्स को बोला जाता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट. ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट मीन्स इट्स लुक लाइक ए यूरेनियम प्रॉपर्टी जस्ट बिकॉज ऑल आर रेडियो एक्टिव इन नेचर. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. So in F block element, this elements in which the last electron enter into this anti-penultimate shell, that is F shell, they include the lanthanide that is called as 6th and actinide that is called as 7th period. तो 6th and 7th period के अंदर ये ग्रुप पूरा आता है. They are also known as inner transition element. Inner transition का मतलब क्या होगा? ट्रांजिशन का मतलब तो सर पता चल गया कि D block element. अब इनर ट्रांजिशन का मतलब आप लोगों को मैंने एक बॉक्स दिखाया था डी से आगे. सो बेसिकली दे आर इनटू दिस डी ब्लॉक. डी ब्लॉक के अंदर एक पूरा सा ब्लॉक है. दैट्स व्हाई दे आर एंटाइटल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. यू कैन सी हियर डी ब्लॉक स्टार्ट. डी ब्लॉक यहां से स्टार्ट हो रहा है. सो दिस इज इन बिटवीन डी. डी के अंदर सबसे पहले 57 to 71 आएगा, देन फिर से डी स्टार्ट हो रहा है. So that's why that is inner transition. Transition के अंदर आने वाले elements 57 to 71 and 89 to 103.
So this is transition element and this is entitled as inner transition elements. So F block are entitled as inner transition element. That general electronic configuration is N-2, F1 to 14, N-1, D0 to 1, NS2. They are all metals. Within each series of this property of these elements are similar. Actinoids elements are radioactive in nature. मैंने बताया 92 से elements को बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम. यहाँ पे लिखा हुआ elements after uranium in actinide series are known as trans uranium elements or trans uric elements or artificial elements. So this is all about your F block elements. So in this session we'll discuss block-wise arrangement of modern periodic table. That is called S block element. S block के अंदर 2 block होते हैं. P block element total 6 block. Group 13 से 18. D block group number 3 to 12. And last inner transition element that is 4F and 5F that is called is F block element. So this is all about your today's session.